हेलो ओरियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेंचर के 100+ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस क्वेश्चन के बारे में। आज हम जो कुछ जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं ये 2022, 23 और इस साल 2024 में पूछे जा चुके हैं। लेवल की बात करें अगर क्वेश्चन की, वो मीडियम से हार्ड है, ठीक। जिनकी संभावना सबसे ज्यादा है जो क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसका जो पीडीएफ लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की बात करते हैं। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड व्हाट डज द फीचर रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग अलाउ अ यूजर टू कंट्रोल इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक, बेसिकली ये जो रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग फीचर्स है ये बेसिकली अलाउ करता है यूजर को टू लिमिट द टाइप ऑफ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग दैट कैन अप्लाइड बाय अ अदर यूजर। तो इसका ऑप्शन है डी, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेटिंग टू अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट अवेलेबल इन द कंपेयर टूल्स इन एमएस वर्ड। ठीक, नाउ अगर कंपेयर टूल की बात करें तो एक कौन सा फीचर्स है जो अवेलेबल नहीं होता है, वो है कंपेयर स्पेसिफिक स्टाइल। बेसिकली जो कंपेयर टूल्स है, ये कंपेयर टूल्स बेसिकली है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई चेंज बिटवीन द टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इट इज फोकस ऑन द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर चेंजिंग रेदर देन द कंपेयरिंग स्पेसिफाइड स्टाइल फॉर्मेट। सो ऑप्शन डी इज अ नॉट टाइप ऑफ ऑप्शन that are available on the compare tools। ठीक, now move to the next question। next question है, in word table of content what does the field /hash do। बेसिकली अगर इसकी बात करें, बेसिकली ये हेल्प करता है टू हाइपरलिंक टू द हेडिंग। ठीक, ये जो कोड है /hash, ये बेसिकली इट इज अ टीओसी that help to add a hyperlink to each heading in the table of the contents। Basically, it is also allow a user to navigate directly from a specific section of the document by clicking on TOC entity। ठीक, so ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बेसिकली सीधे सीधे शब्दों में बताएं कि ये बेसिकली हाइपर लिंक करता है कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when using MS Word track change which of this option is incorrect for reviewing change। ठीक, now अगर बात आ रही है कि ट्रैक चेंज के बारे में, सबसे पहले जानते हैं ट्रैक चेंज बेसिकली होता क्या है। देखिए, जो ट्रैक चेंज है, बेसिकली ट्रैक चेंज हम लोग चेंज को ट्रैक करते हैं और ये अलाउ करता है यूजर टू उस पर नजर रखे कि कितना उसमें चेंजेस हो रहे हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक, अब यहाँ बात आ रही है व्हेन यूजिंग एमएस वर्ड ट्रैक चेंज विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर रिव्यूइंग चेंजेस। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फाइनल एडिट मोड। बेसिकली फाइनल एडिट मोड इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। और all the correct option like simple markup, all the markup and no markup, basically it's all the valid review mode that help a user to view or hide track change during editing। So option D is not a option for reviewing change। ठीक, now move to the next question। next question है, in word citation manager which allow you to insert source in a multiple reference style within a same document। ठीक, तो इसका आंसर है वो है मास्टर सोर्स लिस्ट। बेसिकली मास्टर सोर्स लिस्ट allow you to manage source across a multiple document and import them while switching style in is managed from a reference tab to apply a consistent style, not mixed style। So option A is the correct one, master source list। Basically it's allow you to manage a source for multiple documents। now move to the next question। next question है, which which excel function would return the relative position of an item within a specific range। ठीक, अगर स्पेसिफिक रेंज की बात आ रही है यहाँ पे और रिलेटिव पोजीशन की बात आ रही है तो हम लोग कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मैच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। मैच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन वैल्यू इन अ स्पेसिफिक रेंज। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ डेटा टेबल फीचर्स इन एक्सेल व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक, अगर इसकी बात आ रही है तो बेसिकली आप डेटा टेबल समझ लेते हैं कि डेटा टेबल होता क्या है। बेसिकली डेटा टेबल जो फीचर्स है एक्सेल के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस, इट बेसिकली अलाउ करता है यूजर को टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट वैल्यू ऑन अ फॉर्मूला यूजफुल फॉर सेंसिटिव एनालिसिस। सो ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, टू टेस्ट डिफरेंट आउटकम विद एन अ वेरिएबल इनपुट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्सेल फंक्शन रिलेटिव डेटा फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल लुकअप वैल्यू। ठीक, नाउ सबसे पहले
अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप वैल्यू के बारे में। ये बेसिकली परफॉर्म अ हॉरिजॉन्टल लुकअप इट आइडियल व्हेन द लुकअप वैल्यू आर इन द फर्स्ट रो ऑफ अ टेबल। so which function is used for relative data option? So h lookup यानी कि horizontal lookup. now move to the next question. अगर वर्टिकल लुकअप की बात की जाए तो वी लुकअप आता है, ठीक। अगर यहाँ पे आ जाता है वर्टिकल लुकअप तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एक्सेल व्हाट डज द फंक्शन ऑफसेट रिफर रो कॉलम और रिटर्न, ठीक। बेसिकली our offset function की बात करें, basically it is help to return the value of a cell that is offset by a specific number of row or column from starting reference point. So option B is the correct one, a value in a cell that offset from a starting point. Now move to the next question. Which advanced Excel tools allow a user to create a series of linked data summarize, ठीक। तो अगर इसकी बात आ रही तो यहाँ पर होता है पिवट टेबल। बेसिकली पिवट टेबल बेसिकली इनेबल करता है यूजर टू क्रिएट अ डायनेमिक समराइज फॉर ग्रुपिंग, सॉर्टिंग एंड कैलकुलेटिंग द डेटा सोर्स फ्रॉम लिंक्ड टेबल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक। अगर बात करें डिफरेंट गोल सीक की और स्लोवर की, ठीक, ये बेसिकली फोकस करते हैं सिंगल वैल्यू पे और ऑप्टिमाइजन पे, ठीक। तो हम लोग जो करेक्ट है पिवट टेबल बेसिकली अलाउ करता है यूजर टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ लिंक्ड डेटा समराइज, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which tools in PowerPoint ensure that objects are evenly distributed on a slide, ठीक। Now यहाँ पे लिखा डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे पहले समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टूल्स ऑब्जेक्ट होते क्या है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट बेसिकली टूल्स है टू स्पेसिफाई द आइटम इवनली, वेयर एज अलाइंग ऑब्जेक्ट एंड अलाइंग ऑब्जेक्ट बेसिकली हेल्प करता है पोजिशन ऑब्जेक्ट को बेसिकली टू द वन अनदर विदाउट इवन स्पेसिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड object, basically a tool that specified item evenly, so distributed object is the correct one. Now move to the next question. Which of the following is not a transaction effect in PowerPoint? अगर transaction effect की बात की जाए तो ऑप्शन सी पेन हमारा क्या है, इट इज नॉट एन ट्रांजेक्शन इफेक्ट। बाकी अदर क्या है हमारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट है दैट कैन ऐड एनिमेशन बिटवीन अ स्लाइड, ठीक। ये और ये यानी कि ए बी और डी ये क्या है ट्रांजेक्शन इफेक्ट है, खाली सी ऑप्शन जो कि ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द मास्टर स्लाइड फीचर्स कंट्रोल इन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक। अगर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की बात आई मास्टर स्लाइड के बारे में तो मास्टर स्लाइड पहले जान लेते क्या होता है। देखिए मास्टर स्लाइड बेसिकली अलाउ करता है, अलाउ फॉर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस द स्लाइड, across all slide and control universal element like a title, style and background. So now tell me the answer कि what does the master slide feature control in a PowerPoint presentation? Basically it's a universal layout and design element. Option B is the correct one. Now move to the next question. What is the purpose of rehash timing features in PowerPoint, ठीक। बेसिकली अगर इसकी बात करें होता क्या है, सबसे पहले देखिए इट रिकॉर्ड द टाइम स्पेंड ऑन ईच स्लाइड एंड सेव इट, ठीक। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो वहाँ पर टाइमिंग चलता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है आपने पर्टिकुलर स्लाइड पे कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो है टू ऑटोमेटिकली सेट द स्लाइड ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द टाइम, ठीक। हम लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम को भी सेट कर सकते हैं कि अगर इतने पर्टिकुलर ये स्लाइड चलेगी उतने दूसरी बार इसके बाद मूव करके सेकंड स्लाइड आ जाएगी, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In PowerPoint, which tools allow the presenter to examine the parts of the slide during a presentation? जो कि है लेजर पॉइंटर। बेसिकली लेजर पॉइंटर टूल्स है in a presenter view that can help to emphasize part of the slide while automation allow making up the slide directly. So laser point basically help करता है presentation को to emphasize part of the slide during a presentation. So option B is the correct one. Now move to the next question. Which Outlook feature allow a user to delay the sending of email, ठीक। फीचर्स का नाम बताना है, वो होता है डिले डिलीवरी। इसलिए डिले डिलीवरी का ऑप्शन होता है अंडर मैसेज ऑप्शन इन आउटलुक, अलाउ टू शेड्यूलिंग एन ईमेल टू सेंड लेटर, ठीक। हम लोग ईमेल क्रिएट करके रख लेते हैं, हम लोग डिले डिलीवरी का इस्तेमाल करते हैं कि ये कब मैसेज को हम लोग सेंड करेंगे, डिलीवर करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फोकस इनबॉक्स इन आउटलुक? फोकस इनबॉक्स की बात की जाए बेसिकली फोकस इनबॉक्स सबसे पहले होता है कि ये होता क्या है ये समझ लेते हैं। बेसिकली फोकस इनबॉक्स बेसिकली इट्स हेल्प टू डिवाइड ईमेल इनटू अ फोकस फॉर इंपॉर्टेंट मैसेज एंड अदर
फॉर अ लेस क्रिटिकल ईमेल एडिंग एन ईमेल मैनेजमेंट। ठीक, तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो फोकस यानी कि जो इंपॉर्टेंट मेल होते हैं, ठीक, उनमें और अदर मैसेज में ये डिवाइड कर देता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? टू ऑर्गेनाइज इंपॉर्टेंट ईमेल सेपरेटली। ठीक, नाउ ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In MS Outlook, which features allow a user to prevent receipt from forwarding or copying an email? ठीक, कौन सा ऐसा फीचर है जो यूजर को प्रिवेंट करता है रिसिप्ट फॉर फॉरवर्डिंग और कॉपिंग एन ईमेल? तो इसका आंसर है वो है IRM, बेसिकली इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट। देखिए, इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट एक स्ट्रिक्ट ऑप्शन है, एक्शन है कह सकते हैं, या ऑप्शन कह सकते हैं, एक्शन कह सकते हैं, सच जैसा कॉपिंग फॉरवर्डिंग, print emailing, while encrypt secure email content. IRM specially control receipt action. So option C is the correct one. Now move to the next question. Which features in Outlook help user to manage multiple time zone within a calendar view? ठीक, now ये है डुअल टाइम जोन सेटिंग। बेसिकली डुअल टाइम जोन सेटिंग बेसिकली अलाउ करता है यूजर टू क्रिएट 2 टाइम जोन इन द कैलेंडर व्यू, यूजफुल फॉर शेड्यूलिंग अक्रॉस द डिफरेंट रीजन। कैलेंडर ग्रुप ओनली हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द डिफरेंट टीम कैलेंडर। ठीक, बात अगर बाकी की बात करें, जैसे कि जो डुअल टाइम की बेसिकली ये टाइम को डिवाइड कर देता है, 2 टाइम जोन बना देता है। बाकी अगर बात करें कैलेंडर ग्रुप की और टाइम जोन कैलकुलेटर की या वर्ड क्लॉक की, सबसे वर्ड क्लॉक आपको पता ही है, फिर ओवरऑल वर्ड क्लॉक बताता है, टाइम जोन जो कैलकुलेट करता है वो है। और कैलेंडर ग्रुप की बात करें, बेसिकली ये कैलेंडर ग्रुप ये हेल्प करता है ओनली इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टीम कैलेंडर में। ठीक, basically calendar group only help in organizing different team calendar. ठीक, but whereas dual time zone basically it's help to user to create 2 time zone in the different in the calendar view. ठीक, option C is the correct one. Now move to the next question. What is the main purpose of focus email? ये अभी आ चुका है। basically it's help to separate important email. ओके, ये अभी पीछे मूव कर गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ रूल फॉर ईमेल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया? ठीक, ईमेल बेस्ड की यहाँ बात आ रही है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इनबॉक्स रूल्स। बेसिकली इनबॉक्स रूल्स हेल्प करता है, इनेबल करता है यूजर टू ऑटोमेट सॉर्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ इनकमिंग ईमेल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन लाइक सेंड और कीवर्ड। ठीक, हम लोग यहाँ पर रूल को डिफाइन कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक जो ईमेल बेस्ड पे, जैसे कि हम लोग को क्या करना है, किस कंडीशन में हमको जो मेल आए वो आए, और अगर पर्टिकुलर मेल अगर किस हम लोग रूल डिफाइन एक इजी तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग सॉर्टिंग करते हैं और हैंडल करते हैं इनकमिंग मेल को डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक कंडीशन लाइक हमारे कीवर्ड्स और सेंडर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो है इनबॉक्स रूल्स। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Excel function return the number of whole work day between the 2 dates in excluding weekends and holidays? ठीक, now ये जो फंक्शन है ये है नेटवर्क वर्क डेज। बेसिकली इट इज अ हेल्प टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वीकेंड बिटवीन द 2 डेट्स एक्सक्लूडिंग वीकेंड एंड ऑप्शनल हॉलीडे है। ठीक, अगर अदर उसकी बात करें, अदर ऑप्शन की, जैसे कि वर्क डे की बात करें, बेसिकली इट इज हेल्प टू रिटर्न द इंड डेट आफ्टर अ सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्क डेज। ठीक, सो फॉर रिटर्निंग द नंबर ऑफ होल वर्क डे बिटवीन द 2 dates excluding and weekends and holidays, we just move to the option A. Option is the correct one, network work days. ठीक, now move to the next question. In Excel, what does the formula equal to sum if allowed to do if allowed to do that equal to sum if does not? ठीक, बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो ये फीचर्स है, ये फीचर्स बेसिकली ये फंक्शन कह सकते हैं, ये फंक्शन इट्स अलाउड टू समिंग द मल्टीपल क्राइटेरिया। ठीक, जो कि सम इफ नहीं कर पाता है, सम इफ सपोर्ट only one condition, but for whereas this it's control multiple criteria. ठीक, so that's why the option is some value based on the multiple condition. ठीक, बट अब एक चीज याद रखिएगा, जो सम इफ है ये एक ही कंडीशन पे काम करता है और ये मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न आर रेंज ऑफ डिफरेंस शिफ्टेड ऑन ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ रो एंड कॉलम फ्रॉम स्टार्टिंग सेल और रेंज? ठीक, तो ये है ऑफसेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑफसेट बेसिकली रिटर्न करता है सेल और रेंज ऑफ सेल शिफ्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग डिफरेंस, वेयर एज
other option like index or indirect, it provide only different reference capabilities, ठीक. So option B is the correct one, that help to return a range between the shifted on a specific number of row and column from starting cell or range. Option B is the correct one. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एक्सेल पावर क्वेरी विच ट्रांसफॉर्म स्टेप वुड यूज टू अनपिवट डेटा फ्रॉम वाइड फॉर्मेट इनटू अ लॉन्ग फॉर्मेट, ठीक. तो इसका ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म एंड unpivot column. Option B is the correct one. Unpivot column basically transform data from wide format to a long format, making it ideal for preparing data for analysis. So option B is the correct one. Now move to the next question. Now next question है कि which Excel allow user to search an optimal value for changing multiple variables, ठीक. तो यहाँ पे आता solver. Solver basically is an advanced tool that perform a complex optimization by changing the multiple variable within a specific constraint. So option B is the correct one, whereas goal seek it's allow only adjust one variable, ठीक. So option B is the correct one. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज क्यूब सेट फंक्शन डू इन एक्सेल. अगर क्यूब सेट की बात आ रही है सबसे पहले समझ लेते हैं क्यूब सेट होता क्या है. बेसिकली क्यूब सेट वर्क विद द OLAP data source to define a set of data that can be used in a pivot table for advancing report, especially in a data modeling. So for CubeSat function, what to do in Excel? So it do basically create a set for a OLAP based report. So option C is the correct one, ठीक. Now move to the next question. ये जितने क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक, जो कि पूछे जाते हैं सेंचर में. आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मैं रिपोर्ट को ये जो ओवरऑल पीपीटी को शेयर भी कर दूंगा, ठीक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन MS Access व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉइन इन अ क्वेरी, ठीक. अगर जॉइन की बात आ रही है बेसिकली जॉइन होता क्या पहले ये समझ लेते हैं. बेसिकली जॉइन इन एसएस लिंक अ रिकॉर्ड फ्रॉम टू टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड फील्ड enabling यूजर टू व्यू कंबाइंड इंफॉर्मेशन, ठीक. सो what is the correct option? Correct option is to combine a record based on the common field, ठीक. आपने देखा होगा दो कॉलम होती हैं, दो कॉलम में हमको कंबाइन करना है डेटा को, तो बेसिकली एक ऐसी फील्ड होती है जिससे हम लोग लिंक कर सकते हैं. एक प्राइमरी होता है, ठीक. प्राइमरी अगर आपने SQL डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे जॉइन आपको पता होगा जॉइन कैसे काम करता है, ठीक. तो यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, टू कंबाइन अ रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड, ठीक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप of join display all the record from the first table and only match record from the second table, ठीक. आपको बताना है which of the following type, ठीक. आपको टाइप बताना है तो वो होता है लेफ्ट जॉइंट. बेसिकली लेफ्ट जॉइंट रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड from the first left table and only match record from the second right table, ठीक. That's why left join is a type of join that display all the record from first table and only match from the second table, ठीक. Whereas इनर जॉइन की अगर हम लोग बात करें इनर जॉइन ओनली रिटर्न द ओनली मैच फ्रॉम बोथ द टेबल, ठीक. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हियर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एसएस व्हाट टाइप ऑफ क्वेरी इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल फ्रॉम अ सिलेक्टेड फील्ड इन एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक. अगर इसकी बात आ रही है, ठीक, विच टाइप ऑफ क्वेरी विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल फ्रॉम अ सिलेक्टेड फील्ड. सो here we move to the make table query because make table query create a new table from a field in existing table. और वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें append की, basically append it's append query basically is used to add a data to an existing table rather than creating a new one, ठीक. तो ये basically ये append क्या करता है न्यू डेटा को ऐड करता है जो प्रेजेंट टेबल में है उसके अंदर. ये कभी न्यू टेबल को क्रिएट नहीं करता है. बट मेक टेबल क्या करता है ये बेसिकली न्यू टेबल को क्रिएट करता है फ्रॉम अ फील्ड इन एग्जिस्टिंग टेबल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच एसएस डेटा टाइप इज बेस्ट फॉर स्टोरिंग अ लॉन्ग टेक्स्ट एंटिटी एक्सीडिंग 255 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक. सो 255 कैरेक्टर, ठीक. नाउ तो यहाँ पे है लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक. बेसिकली लॉन्ग टेक्स्ट अलाउ करता है टू स्टोर अ लार्ज टेक्स्ट एंटिटीज. जैसे कि अगर टेक्स्ट साइज बड़ा हो तो लॉन्ग टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं. वहीं अगर शॉर्ट टाइम अगर जो लिमिटेड टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, तो वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन क्वेरी इन एसएस, ठीक. सो selected query is it is a retrieve data type without altering it, while other query like append query or delete query or update query
मॉडिफाइड डेटा इन अ डेटाबेस, ठीक। तो ये जो ऊपर ऑप्शन ए बी सी क्या है, अपेंड अपडेट डिलीट, ये बेसिकली जो क्वेरी है ये मॉडिफाई करती है डेटा इन अ डेटाबेस, ठीक। वेयर एज सेलेक्टेड क्वेरी इट रिट्रीव द डेटा विदाउट अल्टरिंग इट, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एसएस व्हिच फंक्शन वुड यू यूज टू calculate the number of record in a data set that meet certain criteria, ठीक। Now that is d count, basically d count it count the record that meet the specific criteria in access, whereas count if and sum if is used to use in an use is used in excel but not access, ठीक। सिर्फ डी काउंट ही ऐसा है जो कि एम एस एक्सेस में इस्तेमाल होता है, और काउंट इफ और सम इफ क्या है, ये सिर्फ एक्सेल में इस्तेमाल होता है, ठीक। ये एसएस में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which features in PowerPoint allow to create an interactive branching within a slide show, ठीक। इंटरेक्टिव ब्रांचिंग की बात की जाए तो यहाँ पर स्लाइड लिंक, बेसिकली स्लाइड लिंक क्रिएट करता है, क्लिकेबल लिंक फ्रॉम ब्रांचिंग बिटवीन द स्लाइड अलाउ टू मोर इंटरेक्टिव ऑन अ नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ पावर पॉइंट स्लाइड जूम, बेसिकली स्लाइड जूम की बात की जाए तो बेसिकली स्लाइड जूम अलाउ अ सेक्शन बेस्ड नेविगेशन विद इन अ प्रेजेंटेशन, इट्स हेल्प टू क्रिएट अ मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव स्लाइड flow, so option C is the correct one, provide a navigation within a section, ठीक। option C is the correct one। now move to the next question। next question है कि which PowerPoint view is specifically designed for editing the text content in outline form, so here outline view is used to design to edit the text structure from presentation without focusing on a visual, making it deal for a planning content, so option B is the correct one, outline view। now move to the next question। which features in PowerPoint help to convert handwriting or drawn shape into a more precise shape and text, so here the option is link to shape, option A is the correct one, basically link to shape transform the drawn shape into a precise shape, while other option like link to text, it basically convert handwritten text to a text only, ठीक। and whereas ink replay, it's only replay the drawing sequence, so option A is a correct one, that help to convert a handwritten or drawn shape into a more precise shape and text, ठीक। now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पावर पॉइंट फीचर्स अलाउ यू टू क्विकली फॉर्मेट टाइटल और लिस्ट with enhanced design and visual impact, so it is a smart art provide a pre-designed or iterative design from a list, it is an hierarchy and process make a complex information visual appealing, so option C is a correct one। now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द रीयूज स्लाइड ऑप्शन इन पावर पॉइंट अलाउ यू टू डू, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट रीयूज स्लाइड, बेसिकली इट्स यूज्ड टू insert slide from another presentation into a current one and keep formatting layout consistent, so option B is the correct one, to import slide from another presentation। now move to the next question। question number 39, in PowerPoint which features would you use to apply consist animation across a multiple slide, so when we talk about animation painter, so option B is the correct one, animation, so animation painter basically copy animation setting from one object to another, so it is also ensured that it ensured that consistency of animation across the slide, ठीक। so you can also check that it is copies animation from one object to other, ठीक। while other option like slide master, it is basically control slide and layout, not animate, ठीक। slide master is only used for control the slide layout, ठीक। when we talk about across the multiple slide for consistencies, we move to the animation painter that help to copy the animation from setting from one object to another object, option B is the correct one। now move to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पावर पॉइंट ट्रांजेक्शन इफेक्ट, सो अगर ट्रांजेक्शन इफेक्ट कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है ट्रांजेक्शन इफेक्ट का, वो है ऑप्शन नंबर डी, ओवरले, बेसिकली ओवरले इज नॉट अ ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन पावर पॉइंट, ठीक।
transaction effects such as a fade, wave, or option C, that all are a transaction effect that controls slide movement style. ठीक. So not an option for transaction of effect, so D option is the correct one. Now move to the next question. Next question है, in Excel what does the forecast sheet tools in a data table do? So first, what is the forecast sheet? Basically forecast sheet tools, it's project future value based on the existing data trend, useful for sale or budget projection. So option B is the correct one, to create a future object data object projection based on the historical data. See, go to the next question. Which function calculate the internal rate of return for a series of cash flow in Excel? So it's the IRR. Basically IRR compute the internal rate of return for a series of cash flow, while other option like NPV, it is basically calculate the net present value based on the discount rate. So option A is a correct one. Now move to the next question. Next question है कि what is the purpose of Excel function equal to X lookup compared to the V lookup? ठीक. अगर इसकी बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्स लुकअप बेसिकली है क्या. ठीक. बेसिकली एक्स लुकअप सपोर्ट सर्चिंग अक्रॉस अ रो और कॉलम, एंड इट अलाउ अ मोर फ्लेक्सिबल लुकअप पैरामीटर देन अ वी लुकअप. बेसिकली वी लुकअप इज सर्चिंग वर्टिकली ओनली, बट एक्स लुकअप search for both vertical as well as a horizontal direction. So option B is the correct one. X lookup allow a searching in a both direction, horizontal as well as a vertical. ठीक. Now move to the next question. In Excel, what does the what if analysis tool specify the scenario manager enable you to do? So for this, first understand what is the scenario manager. Scenario manager help user to save and compare data, compare different set of input value useful for planning and forecasting. So here the correct option is compare multiple set of input value and their outcome. Option B is the correct one. Now move to the next question. Next question है कि which function would you use in Excel to find a position of an item within a range? So that is match. Option B is the correct one. Match return the position of a specific range within a specific item within a range. So other option like index, basically index only return the position of the value. ठीक. Now B option is correct one. Now move to the next question. In Excel, what does the spelling spark lines features allow user to do? ठीक. अब बात करते हैं स्पार्क लाइन्स क्या होता है. बेसिकली इट प्रोवाइड अ क्विक एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ट्रेंड इन अ सिंगल सेल विदाउट ऑक्युपाइंग द चार्ट स्पेस. सो हियर option is the correct one. Insert a small chart within a single cell. Now move to the next question. Next question है, which access feature create a predefined data structure within a data queries or form of based on the specific templates? That is database wizard. Basically database wizard guide user through creating a complete database with a template, saving time on design from scratch. ठीक. So you can also say that it is the complete database. It is a help to create a complete database with the template, saving time and design from scratch. ठीक. Now, so option B is the correct one. Now move to the next question. What does a cross tab query do in Excel? Let's talk about what is the cross tab query. Basically, cross tab query in Excel it basically help to summarize data. Often, it is help to summarize the data. ठीक. Or grouping it by a two dimension like a row or column header. It is similar to the pivot table in Excel. So what is the correct option? It basically calculate, summarize and organize the data in the grid layout. Option B is the correct one. Now move to the next question. Next question है कि which of the following statement best describe a primary key in Excel? Primary key. So primary key is a uniquely identified each record in a table. So what is the correct option here? A field which is used to reference record in other table. So option B is the correct one. Now move to the next question. In MS Excel, what purpose does a macro server? Basically macro allow a user to automate repetitive tasks, making database process and quicker, more efficient without requiring a VBA coding. So what is the correct option here? To automate
repetitive task, ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which SS feature can create a user friendly interface for a data entity, for a data entry and report generation? So that is option number B, form wizard. Form wizard basically it guide a user through creating a data entity, form and streamline data input and interaction within a table, ठीक। now move to the next question. next question है कि which feature in OneNote allow you to embed a document for a direct access and viewing the within a document and viewing the within a document within a notebook, ठीक। so which features in OneNote allow you to embed a document for direct access and viewing within a notebook? So that is the features. File printout basically it insert a copy of document as an image within a notebook and allow a user to view and automate directly into a OneNote. So option C is the correct one. Now move to the next question. What purpose does the tags features serve in a OneNote, ठीक। तो basically what is the tags? So tags mark specific notes and as an important or categorize them like a task is important, ठीक। so what is the correct answer here? Highlighting important notes for an organization. Now move to the next question. What does the data validation features in Excel allow a user to do? So what is the data validation? So data validation ensure that only a specific type of data are entered into a cell and help to prevent error. So here what is the correct option? Restrict the type of data entered in a cell. Now move to the next question. In Excel, what tools would you use to combine data from multiple table based on the column field? So here the correct answer is Power Query. Power Query can combine data from multiple source or table based on the column field and allow data transformation. So move to the next question. Now, which Excel function help to allocate error by evaluating condition across the cell? So correct answer is if error. Basically if error provide a specific result or message where error occur, helping identify issue by issue in a formula. So error option is the correct one. Option number A is the correct one, ठीक। now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्सेल फंक्शन इक्वल टू सम इफ एस फंक्शन डू? बेसिकली अभी मैंने बताया था बेसिकली ये इक्वल टू सम, अगर इफ की बात आ रही है तो ये स्पेसिफिक एक कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर इसकी बात आ रही है तो ये मल्टीपल कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। नाउ सम इफ एस अलाउ यूजर टू सम वैल्यू दैट मीट मल्टीपल कंडीशन. सो हियर द ऑप्शन इज सम वैल्यू बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्राइटेरिया, ठीक. Now move to the next question. In Excel, which analysis tool allow you to reverse engineer that necessary input to reach a target outcome? So when we talk about necessary input for to reach a target outcome, so that is the goal seek. Basically goal seek is used to adjust a value in a formula to achieve a described output. Option B is the correct one. Now move to the next question. In Excel, what is the purpose of using a switchboard? ठीक. Now what is a switchboard? So basically switchboard provide a user friendly menu for navigating through forms and report in a Access database. So what is the correct answer here? To create a navigation menu, ठीक. Now move to the next question. Which query type in Access would you use to make updates and change in the existing data automatically? So that is a update query. Update query basically modify existing record in a table based on the specific criteria. Now move to the next question. Next question है कि in Access what does the compact and repair tools do? Basically compact and repair tool basically help to reduce the data file size and fix minor issue to improve performance. So here correct option is clean up and optimize the database, ठीक. Option A is the correct one. Now move to the next question. What is the purpose of the attachment data type in Access? So attachment is a data type that allow a user to attach files such as an image document directly into a record. So correct option is to attach the file directly to the record. Now move to the next question. Now next question is in Access which data type would you most suitable for field
storing a web URL. So that is hyperlink. Hyperlink is used to store clickable link like URL or email address. Now move to the next question. In OneNote feature enable you to share or collaborate on notes with the other in real time. That is note sharing. Notebook sharing basically allow a user to collaborate and edit notes in a real time with the other user. So it is also using a cloud storage like OneDrive. So note sharing is the correct one. Now move to the next question. In OneNote, what is the purpose of quick note features? So let's talk about quick note. Quick note basically allow user to take a quick and unorganized note that can later be organized within a notebook. So correct option is here, to instant record note without organizing them. Now move to the next question. What does the ink replay features in OneNote enable user do? So when we talk about ink replay, basically ink replay the sequence of stroke used in handwritten notes or drawing that help for reviewing work. So correct option is here, animate drawing to show the record they were created. Option B is the correct one. Now next question, which features in OneNote can be used as an organized note into a subsection? That is a subpage. Subpage are used to create a additional level of organization within a main function, within a main page, and making complex notes easier to navigate. So option D is the correct one. Now move to the next question. Next question है कि in OneNote which feature allow you to flag item for future reference or follow up? So here the correct option is tag. Tag can flag item as an important to do, question and anything. So it is make easier to find later. ठीक, तो टैग हम लोग लगाते हैं इसलिए कि वो एक इंपॉर्टेंट मार्क हो, जैसे कि कोई क्वेश्चन हो गया, कोई टास्क करना वो हो गया, वो इसलिए लगाते हैं कि बाद में हमको उसको जल्दी उसको ढूंढने में आसानी हो. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन आउटलुक विच फीचर लेट यू शेड्यूल एन ईमेल टू बी सेंड ऑन अ स्पेसिफिक टाइम? तो यहाँ पे आता है अगर हम लोग ने ईमेल लिख लिया, बाद में सेंड करना हो तो आता है डिले डिलीवरी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. बेसिकली डिले डिलीवरी क्या करता है, ये अलाउ करता है तो यूजर टू स्पेसिफाइड अ टाइम एंड डेट फॉर सेंडिंग एन ईमेल. यानी कि हम लोग मेल क्रिएट करके लिख लेते हैं, हमने मेल क्रिएट कर लिया 9 बजे, हमको भेजना है इसको दोपहर के 12 बजे, तो हम लोग टाइम को यहाँ पे सेट कर देंगे कि 12 बजे ये मेल डिलीवर हो जाए, तो 12 बजे ही हम लोग मेल टाइम सेट कर देंगे. ठीक, तो 12 बजे ईमेल सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूल्स फीचर्स इन आउटलुक? ठीक, नाउ अगर रूल फीचर की बात करें यहाँ पे, तो रूल फीचर होता क्या है? बेसिकली रूल इज ऑटोमेटिकली एक्शन फॉर इनकमिंग मैसेज लाइक मूविंग टू द फोल्डर, फ्लैगिंग और फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया. सो करेक्ट ऑप्शन इज हियर, टू ऑटोमेट ऑर्गेनाइज इनकमिंग मेल बेस्ड ऑन द कंडीशन. ऑप्शन इज द करेक्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन आउटलुक विच फीचर वुड यू यूज टू सेंड ईमेल टू मल्टीपल पीपल व्हाइल कीपिंग देयर ईमेल एड्रेस हिडन? सो करेक्ट आंसर इज BCC, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ब्लाइंड कार्बन कॉपी कीप रिसिप्ट email address hidden from each other and ideally for privacy in group email. So option D is the correct one. Move to the next question. Next question है, now next question है कि what does the focused inbox feature in Outlook do? Now let's talk about focus inbox. So focus inbox is a separate important email into a main tab. ठीक, सो फोकस इम्पोज क्या है, ये क्या करता है कि इंपॉर्टेंट मेल को और डिफरेंट जो ईमेल है उनको क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट कर देता है. ये डायरेक्टली फोकस करता है कि इंपॉर्टेंट मेल पर. ठीक, उसका करेक्ट आंसर क्या है कि ऑर्गेनाइज एन ईमेल इनटू अ फोकस एंड अदर टैब. ठीक, बेसिकली फोकस इनबॉक्स बेसिकली फोकस करता है कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट ईमेल आता है उस पर फोकस करता है कि ये जो मेल है आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक, ये डिफ्रेंशिएट कर देता है बिटवीन नॉट इंपॉर्टेंट ईमेल और इंपॉर्टेंट ईमेल में. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in MS Excel which of the following function is used to join the multiple text string into a one? So that feature is concatenate. Concatenate basically help to join a multiple text string into a single string in Excel. So concatenate is the correct one. Or let's talk about text join. Text join is can be used for a more dynamic approach within a delimiter. ठीक, so
That's why correct option is to concatenate, that help to join the multiple text into a one. So now move to the next question. In MS Word features, would you use to combine data from an Excel sheet to create a customized document? So the correct option is mail merge. Mail merge is used to combine the data from external source like Excel, and it is also to help to create customized letter, label, or as well as a email. So option B is a correct one. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पावर पॉइंट विच ऑप्शन अलाउ यू टू इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम अनदर प्रेजेंटेशन। ठीक, अगर इंसर्ट स्लाइड्स की बात आए तो ये है री यूज स्लाइड। इसलिए री यूज स्लाइड इट इज यूज टू insert slide from existing PowerPoint presentation into a current presentation. ठीक, now move to the next question. In SS, which type of relationship ensure that record in one table must have corresponding record in another table? That is referential integrity. Option C is the correct one. Referential integrity basically enforce a relationship between a table and ensure that record are consistent across related table. So option C is the correct one. Now move to the next question. Next question है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एक्सेल व्हाट डज अ वी लुक अप फंक्शन डू। बेसिकली वी लुक की बात आ रही है अगर, तो बेसिकली अगर वी लुक बेसिकली होता क्या, पहले ये समझते हैं। बेसिकली वी लुक क्या है, एक वर्टिकल होता है। ठीक है, हम लोग वर्टिकल सर्च करने के लिए हम लोग वी लुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, सर्चिंग अ रेंज वर्टिकल फ्रॉम मैच, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड फीचर अलाउ यूजर टू ट्रैक ऑल चेंज मेड टू अ डॉक्यूमेंट। ठीक, नाउ दैट इज ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज हेल्प user to record edit, making it easier to see revision made by different user. So option C is the correct one. Move to the next question. In Outlook, how do you send automate replies when you are out of the office? So that is used by the out of office assistant. Out of office assistant basically help to send automate reply to email during a specific time period. Now move to the next question. Next question is, what features in Word automatically update document heading in a table of content? ठीक, so here option is update field. Update field is automatically update the change in the table of content to reflect current document structure. Option D is the correct one. Move to the next question. In MS Publisher, what features help to keep the formatting consist across a multiple page? That is a master page. Option is the correct one. Master page apply consist layout slide formatting across the multiple page in a application. So option A is the correct one. Now move to the next question. Next question है, which Excel function would you use to see the calculate the number of unique value in a range? Now when we talk about a unique value, so we move to the unique function. Unique function is used to provide a list of distinct value within a specific range. Option B is a correct one. Move to the next question. In SS, which object would you use to retrieve a specific data from a database? That is a query. Query is used to retrieve and manipulate a specific data based on a condition. So option C is a correct one. Now move to the next question. Next question है, which features in PowerPoint help us to create a handout of the slide with a line for a note taking? So here when we talk about handout, basically handout क्या होता है कि handout master allow a user to print slide with the space for note alongside them. So handout master is the correct one. When we talk about handout, so answer is handout master. ठीक, now next question. In Excel, which function find the average of range of value excluding zero? ठीक, यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे एवरेज की बात आई, एवरेज रेंज ऑफ वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीरो. सो इट्स एन एवरेज इफ. Average if basically help to calculate the average of cell that meets specified criteria such as excluding zero. Option B is the correct one. Now move to the next question. Now next question is, in OneNote, which features allow you to search across a notebook from a specific keyword? अगर specific keyword की बात आ रही है, ठीक, to search across a notebook, that is a cross notebook search. Cross notebook search is allow you user to find the keyword across the open notebook. So option D is the correct one. Move to the next question. Which SS feature allow you to create a calculated field within a table or a query? So and option is expression builder. Expression builder help us to create calculate field within a function or formula. ठीक,
So option B is the correct one, that help to create a calculate feed within a table or a queries. ठीक. Now move to the next question. Next question है, इन वर्ड व्हाट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर टूल्स. ठीक. अगर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर टूल की बात आ रही है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डॉक्टर इंस्पेक्टर टूल्स होता क्या है. बेसिकली इट्स हेल्प टू रिमूव अ मेटाडेटा, कमेंट और हिडन इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग द डॉक्यूमेंट. सो what is the correct option here? To identify metadata and hidden content. Option B is the correct one. Now move to the next question. In Excel, which chart type is best suited to show portion of a whole? ठीक. So here the correct chart is pie chart. Pie chart is visual representation portion that help to display how individual part contribute to the whole. So if you've seen the whole pie chart, so it is distributed like this, and everything mentioned here it's the 75%. So the correct option is pie chart. Now move to the next question. Next question is, in MS Word, which tool can you use to manage a large document by grouping page? So for grouping page, we just used master document, because master document allow a user to organize large document into a sub document for easier management. So option C is the correct one, master document. ठीक. Now move to the next question. Next question is, in Outlook, what is the primary use of calendar feature? Basically calendar help us to organize the meeting, events as well as a reminder. So correct option is to schedule appointment and event. ठीक. Now move to the next question. Next question is, in publisher, which option help us to adjust text to fit precisely within a shape? ठीक. अगर शेप की बात आ रही है तो आता है text fit. Text fit is automatically adjust the text size or as well as a spacing to fit within a selected shape. Option A is the correct one. Now move to the next question. Which word features allow for easier navigation and overview by displaying the heading and subheading? So the correct option is outline view. Outline view help with the document structure by displaying the heading as well as a subheading for quick navigation. So option A is the correct one. Now move to the next question. Next question is, in PowerPoint, which features help you to make consistent text and slide layout across a presentation? So the correct one is slide master. Slide master basically help to control the presentation overall look, ensure consistent format on each. So slide master is the correct one. Option B is the correct answer. Now move to the next question. In MS Excel, which function would you use to find the position of a specific value within a range of cell? That is match. Option B is the correct one. Match help us to return the position of a specified value within a defined range. Now move to the next question. Next question is, in PowerPoint, which features allow you to add interactive question poll or quiz to a presentation? So that is a poll everywhere add-in. Option C is the correct one. Poll everywhere add-in enable interactive elements like a quiz, poll within a PowerPoint slide. So move to the next question. In MS Word, which features allow you to restrict a certain part of the document for editing while leaving other open? So option B is the correct one, restricted edited. हम लोग restricted editing का फीचर इसलिए इस्तेमाल करते हैं because it's allow user to limit modification on a specific area of a document. हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि कितना कौन पर्सन अदर यूजर कितना हमारे डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकता है या एडिट नहीं कर सकता है, हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं. ठीक. Now move to the next question. Next question is, which Excel features provide a recommendation of for visualization based on the data selected? So here the correct option is recommendation chart. Recommendation chart basically suggests the most suitable chart type based on the data structure and content. So move to the next question. In MS Access, which type of query modification or update record in a table? So here a correct option is update query. Update query help us to modify or update a specific record within a table. Now move to the next question. Next question is now next question is, in Outlook, which tools allow you to organize email automatically based on the customized to rules? So correct answer is rules or alerts.
सो आपको ये बताना है कि ये ऑप्शन क्यों सही है, ठीक, ये क्या करता है, ठीक, ये कमेंट में आप बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच फंक्शन वुड यू यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल और रेंज बाय स्पेसिफाई बोथ एंड कॉलम इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट रिट्रीव द डेटा फ्रॉम टेबल और रेंज बाय स्पेसिफिक बोथ रो एंड कॉलम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंडेक्स, ठीक। और वेयर एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लुक, इट इज यूज फॉर सर्चिंग डेटा, ठीक, इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज vertical column, ठीक। Whereas index is used to retrieve the data from table or arranging a specific form both on row and column index. So now for homework there is a question number 100. You can tell why rules and alerts is used for to organize an email automatically based on the custom rules, ठीक। What about chunk folder and quick step, आपको ये बताना है कि ये तो करेक्ट है, बाकी जो अदर ऑप्शन है कि वो क्या क्या करते हैं, ठीक, वो फीचर्स जैसे कि जंक फिल्टर का क्या काम है, फोल्डर का क्या काम है। फोल्डर बेसिकली इज यूज्ड टू create a folder. What is about quick step as well as a junk filter? So comment in my